Good afternoon, students. How are you? I hope you all are very well at your homes. Today, we will start the next chapter of biology. Why do we fall ill? This question appears very easy. Why do we fall ill? But the answer of this question is not so easy as it appears. Why do we fall ill? To know about this aspect, we have to know about the health and disease. As we know, health is wealth and disease is a curse for any age of life. Thus, the health and disease are two most important issues for human health, human life that affect it mentally, physically, and socially. Health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes. Students, health is a state of physical, mental, and social well-being. It also depends on the physical surroundings and the economic status of a human being. We can understand about the health with the help of a common example. All of us know about the cell. What is cell? Cell is the structural and functional unit of all the living organisms. Cells are made up of biochemical substances like proteins, carbohydrates, fats, or lipids, and so on. The living cell is a dynamic place. Cells move from place to place, but the static cells cannot move, but there is repairing going on. Thus, new cells are being made in our body. The various activities are going on in our body, and all these activities are interconnected. As for example, students, if the kidney are not filtering the urine, what happens? Poisonous substances will accumulate in our body. Under such conditions, the brain will not be able to think properly. For all these interconnected activities, energy and raw material are needed, which is supplemented by food from outside the body. Now, we have to know about the disease and health. First, what is disease? The term disease stands for not ease or not being comfortable. जब किसी व्यक्ति को के कॉमन बॉडी की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है या उसको सही फील नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं. एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू अ लैक ऑफ proper activity of the body is called the disease. Thus, the disease is the opposite and ill aspect of health. Students, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम सभी सेल्स के बारे में जानते हैं. सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं सभी लिविंग बींग्स की, और वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर के बनी हुई होती हैं. एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि अगर बॉडी में किडनीज जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इस कंडीशन में जो हमारा ब्रेन है वो भी सही प्रकार से नहीं सोच पाएगा, और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड होंगे, क्योंकि सभी फंक्शंस क्या हैं? ये इंटरकनेक्टेड हैं. तो उसके बाद मैंने आपको डिजीज की डेफिनेशन बताई. डिजीज क्या होती है कि जब किसी भी रीजन से हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं और हमारे टिश्यूज हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, तब हम उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? द टर्म हेल्थ मीन्स बीइंग वेल और वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग. इट मीन्स, अगर हम इसको डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and not merely an absence of disease is called the health. It is the proper definition of health. So students, that's all for today. Thanks to all of you, and stay home, stay safe. I will send you the PDF of these topics. It means the topics related to this chapter. I will send the PDF tomorrow. Till then, stay home, stay safe. Thank you.